let's see the mechanism of action of loop diuretics, which are high ceiling diuretics. The important loop diuretics or high ceiling diuretics are furosemide, bumetanide, and torsemide. Loop diuretics are also known as high ceiling diuretics. Example: furosemide, bumetanide, and torsemide. Furosemide, bumetanide, and torsemide. Mechanism of action of furosemide. Site of action is thick ascending limb of loop of Henle. Thick, thick ascending loop of Henle is the site of action. Site of action of furosemide is thick ascending limb of loop of Henle. Loop diuretics bind to the luminal side of Na plus K plus 2Cl minus cotransporter. Loop diuretics, they bind to the luminal side of Na plus K plus 2Cl minus cotransporter and blocks its function. They will bind to the luminal side of Na plus K plus 2Cl minus cotransporter and will block their function. There is increased excretion of Na plus and Cl minus in the urine. Okay. The tubular fluid reaches the DCT, contains large amount of Na plus. The tubular fluid reaching the distal convoluted tubule contains large amount of Na plus. Hence, more Na plus exchanges with K plus, leading to K plus loss. Furosemide has weak carbonic anhydrase inhibiting activity. Furosemide has weak carbonic anhydrase inhibiting activity, hence increases the excretion of bicarbonates, that is, it increases the excretion of HCO3 minus. Loop diuretics also increases the excretion of calcium and magnesium. तो furosemide का site of action होता है thick ascending loop of Henle. It binds to the luminal side of Na plus K plus 2Cl minus cotransporter और Na plus K plus 2Cl minus का function को ये block कर देता है. There is increased excretion of Na plus and Cl minus in the urine. The tubular fluid reaching the DCT contains large amount of Na plus. Hence, more Na plus exchanges with K plus, leading to K plus loss. Furosemide has also has weak carbonic anhydrase inhibiting activity, जिसके कारण बाइकार्बोनेट्स का एक्सक्रीशन इंक्रीज होगा. फ्यूरोसेमाइड हैव वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटिंग एक्टिविटी, जिसके कारण HCO3 का एक्सक्रीशन इंक्रीज होता है. Loop diuretics also causes the excretion of Cl2 plus and Hg2 plus. See, this is the Na plus K plus 2Cl minus co-transport system in the thick ascending limb. ठीक है, ये जो Na plus K plus 2Cl को ट्रांसपोर्टर है, ये थिक असेंडिंग लिम्ब में है. ठीक है, Na plus K plus इधर से ट्यूब्यूलर सेल में जा रहा है, ट्यूब्यूलर फ्लूइड से ट्यूब्यूलर सेल में जा रहा है, और Cl भी ट्यूब्यूलर सेल में जा रहा है. ठीक है, और ये जो लूप डायूरेटिक होगा ये इस को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देगा. ठीक है, इस Na plus K plus 2Cl माइनस से जो भी आयन्स है वो ट्यूब्यूलर फ्लूइड से ट्यूब्यूलर सेल्स में जा रहा है. ठीक है, Na plus K plus ट्यूब्यूलर सेल में जा रहा है, Cl माइनस ट्यूब्यूलर सेल में जा रहा है. ये जो लूप डायूरेटिक है ये इनको इनहिबिट कर देगा, जिसके कारण इट विल बी देयर इन द ट्यूब्यूलर फ्लूइड. और ये जो Na plus Cl माइनस होता है ये इंटरस्टिशियम ब्लड में आ जाता है और K plus बाहर आ जाता है. ठीक है, K plus पॉजिटिव पोटेंशियल इन द लूमेन जो होता है वो K plus के कारण होगा. तो Na plus K plus 2Cl माइनस से Na plus K plus Cl माइनस ट्यूब्यूलर सेल में जा रहा था. ट्यूब्यूलर सेल से जो Na प्लस और Cl माइनस है वो इंटरस्टिशियम ब्लड में आ जाएगा और K प्लस वापस से ट्यूब्यूलर फ्लूइड में आ जाता है, एंड दस इट हैज़ अ पॉजिटिव पोटेंशियल इन द लूमेन. और लूप डायूरेटिक जो है वो इस को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करता है. Loop diuretics are called high ceiling diuretics because they are highly efficacious. Okay, they have maximal Na plus excreting capacity.
Loop diuretics have maximum Na plus excreting capacity when compared to thiazides and potassium sparing diuretics. So they are known as high ceiling diuretics because they have maximum Na plus excreting capacity as compared to thiazides and potassium sparing diuretics. The loop diuretics are rapidly absorbed through gastrointestinal tract. Furosemide and bumetanide are administered by oral, IV, or IM routes. Torsemide is given orally and intramuscularly. Furosemide has a rapid onset of action within 2 to 5 minutes of IV, 10 to 20 minutes after IM, and 30 to 40 minutes after oral administration. The duration of action is short, that is 2 to 4 hours. Therapeutic uses of loop diuretics during the initial stage of renal and cardiac edema. Loop diuretics are preferred. Initial stages of hepatic, initial stages of renal and cardiac edema. They are also useful in hepatic edema. Vigorous diuresis should be avoided to prevent hepatic coma. Intravenous furosemide along with isotonic saline to prevent volume depression is used in hypercalcemia as it promotes the excretion of calcium in urine. It is used in acute pulmonary edema. Okay. Initial stages of renal and cardiac failure. 2. They are also useful in hepatic edema. They are useful in hypercalcemia because they causes excretion of calcium. They are useful in acute pulmonary edema. Can they provide quick relief from pulmonary edema? क्योंकि इंट्रावीनस फ्यूरोसेमाइड के कारण प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस और रिलीज होता है जो कि रीनल ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा. इसके कारण सिस्टमिक वीनस कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ vasodilation. It results in shift of blood from central pulmonary to systemic vessels. Okay. तो फ्यूरोसेमाइड के कारण प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस होता है जिसके कारण सिस्टमिक वीनस कैपेसिटेंस और वैसोडाइलेशन इंक्रीज होगा. तो जो ब्लड है वो सेंट्रल पल्मोनरी से सिस्टमिक वेसल्स में शिफ्ट होगा. दिस रिड्यूसेस लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रेशर एंड प्रोवाइड्स क्विक रिलीफ फ्रॉम पल्मोनरी edema. Loop diuretics may be used in cerebral edema, but IV mannitol is preferred in cerebral edema. Hypertension. Loop diuretics can be used in hypertension associated with congestive cardiac failure, renal failure, and in hypertensive emergencies. Furosemide are used in hypertension, hypertensive emergency, and hypertension associated with CCF and renal failure. Furosemide is not preferred in uncomplicated primary hypertension. It is used to prevent volume overload. Furosemide is administered during blood transfusion to prevent volume overload. Adverse effect: electrolyte disturbances, hypokalemia, hyponatremia, hypokalemia, hyponatremia, hypocalcemia, and hypomagnesium. Hypokalemia, hyponatremia, hypocalcemia, and hypomagnesemia. मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस में हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया. ठीक है, यहाँ पे आयंस में सारा हाइपो था, हाइपोकलीमिया, हाइपोनाइट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोमैग्नीसीमिया. मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस में सारा हाइपर है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरयूरिसीमिया. It is also autotoxic and can show hypersensitivity reactions.